Good morning, students. In this lecture, we discuss how to calculate mean deviation in continuous series. For calculating the mean deviation in continuous series, the procedure remains the same as discrete series. The only difference is that there we have to obtain the mid value of the various classes and then take deviation from these value as before. The formula for mean deviation from mean is equal to summation f modulus deviation from mean over n, where d mean is equal to mid value minus mean value. Now mean deviation from median is equal to summation f deviation from median divided by n, where dm is equal to mid value minus median. Coefficient of mean deviation from mean is equal to mean deviation from mean divided by mean. Coefficient of mean deviation from median is equal to mean deviation from median divided by median. Now first example, continuous series. Calculate mean deviation from mean and its coefficient. Marks given are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Frequency 5, 8, 15, 16 and 6. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ, दैट इज m। क्लास इंटरवल ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ 5, 15, 25, 35 and 45। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨ ਫਾइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ f ਤੇ m ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 25, 120, 375, 560 and 270। summation fm ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ 1350। mean is equal to summation fm divided by n is equal to 1350 divided by n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 50 is equal to 27। now ਹੁਣ ਅਸੀਂ find out ਕਰਾਂਗੇ deviation from mean is equal to mid value minus mean value। mean value की है that is 27, that is 25 minus 27। sorry mid value 5 ਆ 5 ਵਿੱਚੋਂ 27 minus किते 22, 8 minus 27, sorry 15 minus 27, 25 minus 27 2, 35 minus 27 8, 45 minus 27 that is 18। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, that is ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ f ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 22 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 110, 96, 30, 128 and 108। summation f d mean is equal to 472। now mean deviation from mean is equal to summation f d mean divided by n is equal to इसकी वैल्यू हैगी 472 and n ਦੀ वैल्यू हैगी is 50। इसकी वैल्यू हैगी 9.44।
Next, coefficient of mean deviation from mean is equal to mean deviation from mean divided by mean is equal to, इसकी वैल्यू साढ़े कोल कितनी सी 9.44 and mean the value is 27 is equal to 0.349 is coefficient of mean deviation. Now second example is calculate mean deviation and its coefficient from median. Size given है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200 and frequencies 4, 6, 10, 8 and 5. मीडियन विच मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले असीं बनावांगे सी एफ 4 plus 6 10 6 10 plus 10 20 28 and 33 and n होएगी summation f the total is 33. हम पहला फाइंड आउट करेंगे सी पहला फाइंड आउट करेंगे मीडियन लिए फॉर्मूला होंदा है कंटिन्यू सीरीज विच n over 2 n कितना 33 divided by 2 is equal to 16.5th item 16.5 के विच आएगा इस क्लास इंटरवल दे विच CF20 and class interval is 160 to 140 to 160. Therefore median lies in 140 to 160 class interval. Now applying the formula median is equal to L1 plus n over 2 minus CF over F into class interval जिन्ना common difference है lower limit केड़ी है that is 140 plus n over 2 value केड़ी सी 16.5 minus CF ਜਿਹੜੀ ਸੀ क्लास इंटरवल लेंदे उस तो ऊपर वाली वैल्यू लेंदे दैट इज़ 10 एक ही है CF फ्रीक्वेंसी इज़ सेम क्लास वाली दैट इज़ 10 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कितना क्लास इंटरवल इज 20 का इज इक्वल टू is equal to 140 प्लस 16.5 ਵਿੱਚੋਂ 10 माइनस करेंगे 6.5 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके 10 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 13 इज इक्वल टू 153. नाउ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ फाइंड आउट करेंगे मिड वैल्यू दैट इज़ m 110 130 150 170 and 190. ਹੁਣ ਅਸੀਂ फाइंड आउट करांगे डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस मीडियन की वैल्यू साढ़े कोल कितनी है दैट इज़ 153. ਹੁਣ ਅਸੀਂ मीडियन दैट इज़ 153 ਨੂੰ मिड वैल्यू ਵਿੱਚੋਂ माइनस करांगे 110 माइनस 153 43 23 3 17 37. नाउ डेविएशन वैल्यू में फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करेंगे 172 138 30 136 185. 661. Now mean deviation from median
is equal to summation frequency deviation from median divided by n is equal to 661 and the value is 33 is equal to 20.03. Now coefficient of mean deviation from median is equal to mean deviation from median divided by n 20.03 and median the value is 153 is equal to 0.1309. Thus mean deviation from median is 20.03 and coefficient of mean deviation from median is 0.309.